Welcome in trigonometry part 4. In the previous part we discussed trigonometrical ratios of some special angle like 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. And in this part we discuss something more about these special angles, as well as we solve some problems also. You have seen sine 0 degree 0, sine 30 degree 1 by 2, sine 45 degree 1 by root 2, sine 60 degree root 3 by 2, sine 90 degree 1. Then cos 0 degree, that 60 degree 90 degree values will come. Cos 0 degree 1, cos 30 degree, that sine 60 degree value will come, root 3 by 2. Cos 45 and sine 45 are same, 1 by root 2, and then cos 60 is 1 by 2, same as sine 30. In this way you have to remember. And cos 90 is same as sine 0, that is 0. Then tan 0 degree 0, tan 30 degree 1 by root 3, tan 45 1 by root 2, tan 60 degree root 3, tan 90 not defined. So these things you have to remember. Then after, first of all, if you have learned these trigonometrical ratios of these angles, let us see one problem to review these results. Okay, let us see one problem. Evaluate let us take one problem from your exercise only. Evaluate 5 cos square 60, 5 cos square 60 degree minus 4 sec square 30 degree, 4 sec square 30 degree minus tan square 45 degree divided by sine square 30 degree, 30 degree minus cos square 30 degree, cos square 30 degree. This is what is your first question. By solving this problem, you can review the trigonometrical ratios of special angles. Evaluate means you have to find its value. 5 cos square 60 degree minus 4 sec square 30 degree minus tan square 45 degree whole divided by sine square 30 degree minus cos square 30 degree. This is the sum, I think. Let me verify once again. Five cos square 60, 4 sec square 30 minus tan square 45. Achha. Then sine square 30 minus cos square 30. Okay. See, how can we find its value? This is take today as a simple question. 5. Let us write here. 5 is 5. Cos square 60 degree. Cos square 60 degree means cos 60 degree its whole square. देखिए sin square theta means it is sin square theta means it is sin theta and its square. This is what does it mean. So similarly here cos square 60 means cos theta whole square. Okay, cos 60 degree, what is the value of cos 60 degree? Root 3 by 2. Okay,
its square, let it be, minus 4 sec square 30 degree. You have to write the value of sec 30 degree and its square. What will be sec 30 degree? You should think cos 30 degree. What is cos 30 degree? Cos 60 degree it is. Cos 60 degree, what is the value of cos 60? Just a minute. It is sin 60, na? Root 3 by 2 is sin 60. Just a minute. 5 cos 60 degree. What is the value of cos 60 degree? Cos 60 degree is 60 degree it is. It will be same as sin 30 degree. sin 30 का जो वैल्यू होता है वो cos 60 में चला जाता है. ठीक है, तो cos 60 degree will be your 1 by 2 its square. This will be cos 60. Okay, minus 4 sec 30 degree. What is cos 30 degree? Cos 30 degree is root 3 by 2. इसको देखिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, हम उसको साइन सोच लिए थे. cos 60 का वैल्यू होता है, आप देख लीजिए उसको, 1 by 2. तो 1 by 2 लिखे, उसका स्क्वायर माइनस 4 sec स्क्वायर 30 मीन्स sec 30 का होल स्क्वायर. cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है रूट 3 by 2. वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री इज रूट 3 by 2. So value of cos 60 degree will be 2 by root 3. It will be 2 by root 3 in this way. Its square. बात समझ में आए? Cos 30 degree root 3 by 2, sec 30 degree 2 by root 3. Minus tan 45, it is 1. It's also square. Now sin square 30. Sin 30 degree is 1 by 2 its square. Okay, minus cos 30. Cos 30 is root 3 by 2 its square. In this way you have to put the values of all the trigonometrical ratios. Now let us simplify it. 5, it is 1 by 2 square, 1 by 4 minus 4 into 2 square 4 root 3 square 3, so it is 4 by 3 minus 1 square is 1. Here 1 by 2 square is 1 by 4, root 3 square 3, 2 square 4. This is what is coming. Now let us simplify it. One second. Here denominator is 4, here it is 3, here it is 1. So what will be LCM? LCM will be the LCM of 4 and 3, that is 12. Okay. Now we divide this 12 by this 4. 4 3s are 12. 3 into 5, 15, minus, here it is 3. We divide 12 by this 3, 4. 4 into this is how much? This is already 16 is there, into 1 more 4. Okay. Minus, here it is 1 means it is 1 by 1. So we divide 12 by this 1, that is 1 into this 12. 12. And here LCM will be 4. And here divide this 4 by 4, 1 into 1, 1 minus similarly 3. Now let us simplify more. It is 15, है ना? 15 minus 12, let it be 3, minus 16 into 4, 64 by 12 into, here it is 1 minus 3, minus 2, minus 2 by 4, so it will be 4 by minus 2.
अंडरस्टैंड, ये जब यहाँ इंटू करेंगे तो ये 4 विल गो ऑफ 4/-2. सो व्हाट विल बी दिस? 3 - 64 प्लस माइनस माइनस साइन विल बी ऑफ बिगर, so -61/12 into 4/-2. Okay, 4 3s are 12. Now it is -61, and here 3 into -2 -6. This minus minus become plus. So 61/6 is coming finally, is the answer. 61/6 is the answer, or you can say value of this expression. So in this way we can find value of an expression which is involved trigonometrical ratios of 30 degree, 45 degree, 60 degree, whatever it may be. So in this way, if any expression is there, you can find its value. Let us see one more. Let us write one more problems. Let us take second one question number, and previous you keep question number 1, then this is question number 2. Okay, question is, if 10a plus b equal to √3 and 10a minus b a minus b equal to 1/√3. A, b are less than, it is given a plus b is greater than 0, less or equal to 90, है ना, and a is greater than b. Find a and b. This is condition given. Question is, find a and b. This is what is your question. Note down. Question is 10a plus b equal to √3. And 10a minus b is 1/√3. Condition, what does it mean? A plus b is greater than 0 and less or equal to 90. This is what is given. It means this angle, ये जो angle है ना, ये 90 से छोटा है. Whatever trigonometrical ratios we are reading here, that is based on 0 to 90 degree.
90 डिग्री से बड़ा एंगल का त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो हम लोग यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं. Whatever trigonometrical ratios we are reading, angles whatever we are taking, these angles are less than 90 degree. For the angles more than 90 degree, you have to go for standard 11 trigonometry. If anyone want to go beyond that, you go to my profile and go through 11 trigonometry. So these angles is less than 90 and angle A is greater. A is greater means this angle is positive. For negative angle also we are not reading here trigonometrical ratios. Trigonometrical ratios of negative angle is there in standard 11. So there you will get everything. So here, so why this condition is given. So for you people, no need to worry about this condition. It is general condition. 10a plus b is given root 3. 10a minus b is given 1 by root 3. You have to find a and b. This is what is your question. Given, what is given? 10a plus b as root 3. Okay, this is given, and root 3 can be written as 1060 degree. 1060 degree is root 3, and so why a plus b can be written as 60 degree. Remove 10 from both sides and take it equation number 1. इस एंगल का 10 और 60 डिग्री का 10 बराबर है, तो यानी कि ये एंगल 60 डिग्री है. तो in this way we can remove 10 from both side and a plus b can be written as 60 degree. Also it is given 10a minus b equal to 1 by root 3, and 1 by root 3 is your 1030 degree. It's not it. And so why a minus b can be written as 30 degree. Take it equation number 2. So you have got a plus b equal to 60 degree, a minus b equal to 30 degree. So you have to find a and b. So from equation 1 and 2, can you find? Adding 1 and 2, add. So if you add this and this, minus b plus b will be cancelled. A 2a, you will get 2a equal to 60 plus 30 this side, 90. So a equal to 90 by 2, that is 45 degree. Okay, now you can choose any one equation, either equation 1 or 2. From equation 1, what will be b? B will be 60 degree minus a. So 60 degree minus a is 45 degree. So after subtracting, this will gives you 15 degree. Okay, so in this way you can get a equal to 45 degree and b equal to 15 degree. These were some questions in your second exercise of your textbook, and remaining questions I hope you can do. Now we discuss something special related to trigonometrical ratios of these special angles. So these were two basic problems. Now patiently see, some discussion is there which is very important. I hope you have done. तो वीडियो को रोक के भी आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं.
Now, what I said, these special things what we have to discuss. See. Okay, let us see. We have seen sine 30 degree. What was its value? Achha, sine 0 degree. Let us start from 0. One very important observation is there. Sine 0 degree is what? Sine 0, 0. Okay. Then sine 30 degree, what is its value? Its value is 1 by 2. Okay. Sine 45 degree is 1 by root 2, and sine 60 degree is root 3 by 2, and sine 90 degree is 1. Okay, in this way these values are there. See, sine 0 degree 0, sine 30 degree it is 1 by 2. So obviously sine 30 degree is greater than sine 0 degree. 30 डिग्री का वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा है, क्योंकि 30 डिग्री 1 by 2 है, 0 डिग्री 0 था. साइन 45 कितना है? 1 by root 2. हाउ मच इट इज 1 by root 2? 1 by root 2 कितना होता है? मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट 2. रूट 2 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये रूट 2 by 2 इट विल बी. ऊपर रूट 2 हो जाएगा, नीचे रूट 2 इंटू रूट 2. सो रूट 2, देखिए जरा इसको भी, रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414. एक्चुअली रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिसिमल. ये ऐसे करके इसका कोई अंत नहीं है, ये चलता रहता है. लेकिन इसका अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं, 1.41, 2 डिजिट में अगर लेते हैं, और इफ यू वांट टू टेक 3 डिजिट then 1.414. okay, and root 2 by 2, so 1.41 divide it by 2, 0.714, then 1 point is 0, means it is near about 0.75, and so on. It will continue because this is also continuing, so this will also continue, means it is 0.5 अप्रॉक्स 0.75 समथिंग. 1 by root 2 को सिंप्लीफाई करने से ये 0.7 समथिंग आएगा, 0.7.45 एंड सो ऑन. एंड 1 by 2 मीन्स व्हाट? इट इज 0.5. ये 0.5 है, और ये कितना आ रहा है? ये 0.75. तो इससे बड़ा हुआ ना, ये समझे बात? ये और रूट 3 by 2 कितना होगा? रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732 एंड सो ऑन. इट विल कंटिन्यू अप टू इंफिनिटी. ओके, इन शॉर्ट वी टेक इट 1.73 is its approx value. Now let us divide 1.73 by कितना है? रूट 3 by 2. So 2 8 जा 16 point है ना, 1 3 2 6 जा 12, means 0.86 approx. This will gives you 0.86. okay, और ये 1 है. साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 0.5, साइन 45 डिग्री 0.75, साइन 60 डिग्री उससे थोड़ा और बड़ा 0.86, एंड साइन 90 इज 1. सो ये थोड़ा और बड़ा हो गया. सो व्हाट वी आर गेटिंग,
the sine trigonometrical ratio sine is going on increasing as the angle is going on increasing. जैसे जैसे 0 डिग्री से एंगल आपका बढ़ते जाएगा साइन का वैल्यू बढ़ता जाता है. समझ रहे बात? जैसे जैसे एंगल बढ़ता है साइन का वैल्यू बढ़ता है. ये बात आप समझे? तो जैसे आपको हम कहेंगे कि साइन 39 डिग्री है एंड साइन 28 डिग्री, विच वन इज ग्रेटर? ये दोनों में कौन बड़ा है? देखिए जैसे जैसे एंगल बढ़ता है साइन का वैल्यू बढ़ता जाता है. ठीक है, ये साइन 39 वी डोंट नो, साइन 28 वी डोंट नो, बट एंगल इज ग्रेटर सो दिस विल बी ग्रेटर. जैसे जैसे एंगल बढ़ता है साइन का वैल्यू बढ़ता जाता है. तो साइन 39 विल बी ग्रेटर देन साइन 28. इफ एंगल इज मोर वैल्यू ऑफ साइन विल बी मोर. ये बात आपको समझनी थी. ठीक है. सिमिलरली come for cos. What is cos 0 degree? Cos 0 degree is 1. What about cos 30? Cos 30 degree is root 3 by 2. Root 3 by 2 means 0.86. Okay. What is cos 45? This is 1 by root 2. And 1 by root 2 means it is 0.75. And cos 60 is 1 by 2, that is your 0.5. And cos 90 is 0. See here, just opposite. देखिए cos 0 1 है, cos 30 एंगल बढ़ा, ओ सॉरी एंगल बढ़ गया ना, तो एंगल बढ़ने से इट इज 0.86, लेस देन 1. एंगल इंक्रीज, वैल्यू ऑफ कॉस डिक्रीज. कॉस 45 0.75, स्मॉलर देन दिस. cos 60 is 0.5, means it is 0.50, स्मॉलर देन दिस. ये और स्मॉलर हो गया, फाइनली 0 हो गया. तो इन केस ऑफ कॉस, एज योर एंगल इंक्रीज, वैल्यू ऑफ कॉस विल गो ऑन डिक्रीज. जैसे आपको लिखना है कॉस 49 डिग्री एंड कॉस, कुछ भी लिखिए ना, 39 डिग्री. विच वन विल बी ग्रेटर? एंगल जैसे जैसे बढ़ता है घटता है, तो ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, छोटा वाला ही एंगल का कॉस बड़ा होगा. तो इन दिस वे एज योर एंगल विल गो ऑन इंक्रीजिंग, वैल्यू ऑफ कॉस विल गो ऑन डिक्रीजिंग. जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा उसका कॉस घटेगा 0 से 90 तक. ठीक है. और व्हाट अबाउट 10? 0 डिग्री, 0 डिग्री 0. 30 डिग्री इज 1 by root 3. 1 by root 3 means how much it is? 1 by root 3. Multiply it numerator and denominator by root 3. So root 3 by 3. Root 3 means 1.71. So divide 1.71 by 3. 3 6 ja 18, 3 5 ja 15, 0.2, 2 1 3 7 ja means 0.57 it is. ये 0.57 के आसपास है. 10 45 डिग्री is 1. 10 60 degree is root 3. Root 3 means 1.71.
7.3, इट इज 7.3 है ना, 7.3 कीजिएगा तो फिर 0.57 ही आएगा. देन 90 डिग्री, 1090 degrees infinity. So here in case of 10, as angle is going on increasing, your value is going on increasing. जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है आपका 10 का वैल्यू बढ़ रहा है. कॉट में घटता जाएगा, कॉट में घटता जाएगा. देखिए कॉट 0 डिग्री होता है इन्फिनिटी. उसके बाद इससे छोटा हो जाएगा कॉट 30 डिग्री. कॉट 30 डिग्री होता है √3. √3 मतलब 1.73. फिर इससे छोटा हो जाएगा कॉट 45 डिग्री. कॉट 45 डिग्री मतलब 1. फिर इससे छोटा हो जाएगा कॉट का 60 डिग्री. कॉट 60 डिग्री यही होगा 1/√3. कॉट 60 डिग्री हो जाएगा आपका 1/√3 मीन्स 0.57. इस तरह से आपका कॉट 90 डिग्री. कॉट 90 डिग्री तो फिर 0 ही हो जाएगा ना इधर. सो इन दिस वे, इन केस ऑफ कॉट इट इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, इन केस ऑफ 10 इट इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग. साइन में बढ़ता जाता है, कॉस में घटता जाता है, 10th में बढ़ता जाता है, कॉट में फिर घटता जाता है. ठीक है, सेक का देख लेते हैं. Now let us see the case of sec. First of all, what is sec 0 degree? पहले आप बताइए cos 0 डिग्री कितना होता है. cos 0 डिग्री 1. सो sec 0 डिग्री इज ऑल्सो 1. ओके. नाउ sec 30 डिग्री. sec 30 डिग्री. cos 30 डिग्री कितना होता है? cos 30 डिग्री होता है √3/2. तो sec 30 डिग्री will be 2/√3. It is 2/√3. तो 2/√3 कितना होगा भाई? 2/√3. 2/√3. √3 means 1.73. So it will be 200/1.73. नहीं क्या? So let us divide 200. 200 को डिवाइड कर लीजिए 173 ना, इसको 200 कर दिए तो ये 173 हो गया ना. तो 1 टाइम्स 173 फिर पॉइंट देन 0. सो आई थिंक 2 टाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल. 1 है ना, 2 टाइम्स तो ज्यादा हो जाएगा ना. तो 1.1, चलिए अप्रॉक्स वी आर टेकिंग, इट विल कम 1.1. देन sec 60 डिग्री. cos 60 डिग्री होता है 1/2. तो sec 60 डिग्री 2, इसका वैल्यू 2 है. अच्छा तो बीच में 45 ले लीजिए. लेट अस टेक 45 फर्स्ट. sec 45. cos 45 1/√2. So sec 45 will be √2. √2 means it is 1.41 approx. Okay. Then sec 60. Sec 60 it is 2. Then sec 90. Cos 90. Cos 90 0. So sec 90 it is not defined. Infinity. So what you are getting? Sec 0 degree 1, sec 30 degree 1.1. So it is increasing. Sec 45 degree more than that. उससे भी बड़ा हो गया, उससे भी बड़ा हो गया. In this way sec is increasing.
So if anywhere written sec 81 degree and sec 82 degree, which one will be greater? दोनों में बड़ा कौन होगा? एंगल जैसे जैसे बढ़ता है सेक का वैल्यू बढ़ता है, तो जरूर 82 डिग्री का सेक बड़ा होगा। समझ के बात? नाउ एक और देख लीजिए, कॉसेक। और इसको देख लीजिए और एक छोटा सा एक रिजल्ट हम लोग देखेंगे, और इस वीडियो में उतना ही, फिर कुछ सवाल बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, कॉसेक 0 डिग्री कितना? आप साइन 0 डिग्री को याद कर लीजिए। साइन 0 डिग्री 0, सो कॉसेक 0 डिग्री 0 का उल्टा इंफिनिटी। ठीक है। कॉसेक 30 डिग्री पर आइए, साइन 30 डिग्री 1/2, तो cosec 30 डिग्री 2, फिर cosec 45 डिग्री, sin 45 डिग्री 1/√2, so cosec 45 डिग्री will be √2. √2 means it is 1.41. √2 means 1.41. Then cosec 60 डिग्री, sin 60 डिग्री √3/2, it will be 2/√3. ओके, तो 2/√3 मीन्स अभी निकाला था ना 2/√3, हाँ, it is 1.1. एंड cosec 90 डिग्री, sin 90 होता है 1, तो cosec 90 भी 1, ऐसा। सो इन केस ऑफ cosec, देखिए ये इंफिनिटी था, ओह सॉरी, छोटा हो गया ना, इससे छोटा हो गया 2, देखिए और छोटा हो गया, इट इज लेस देन दिस 1.41, इट वाज 1.1, फिर 1 हो गया। सो इन केस ऑफ कॉसेक इट इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। सो कॉसेक 89 डिग्री एंड cosec 88 डिग्री, विच वन विल बी ग्रेटर? एंगल जैसे जैसे बढ़ता है इसका वैल्यू घटता है, तो ये एंगल बढ़ा तो ये घटेगा, ऐसे cosec 88 will be more. So in this way we can see sine, it is going on increasing with the going on increasing of the angles, cos decreasing, tan increasing, cot decreasing, sec increasing, cosec decreasing, अल्टरनेट करके, नहीं ऐसे देख लीजिए, साइन इंक्रीजिंग था ना, cosec डिक्रीजिंग, cos डिक्रीजिंग था, sec इंक्रीजिंग, tan इंक्रीजिंग, cot डिक्रीजिंग। साइन का उल्टा होता है ना cosec, तो साइन जब इंक्रीजिंग है तो उसका उल्टा cosec डिक्रीजिंग होगा, cos का उल्टा होता है sec, cos डिक्रीजिंग था इसलिए sec इंक्रीजिंग था, tan का उल्टा होता है cot, tan इंक्रीजिंग तो cot डिक्रीजिंग। तो आई थिंक दिस प्रॉपर्टी यू हैव अंडरस्टैंड। नाउ a very small property is left, उसको भी आप इस वीडियो में देख लीजिए।
see one most important result. एक ट्रायंगल ले रहे हैं, as a triangle, let it be A B C. ये 90 है. There is a triangle, right angle triangle taken. Okay. Let this angle as theta. मान लिए ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा बताइए. ये 90 माइनस थीटा होगा. ये अगर 90 है तो ये दोनों का सम 90 होना चाहिए. ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा. बात समझे? अच्छा, फॉर दिस थीटा एंगल दिस विल बी परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस, और हाइपोटेनस तो ये फिक्स्ड है सदाबहार. 90 का ऑपोजिट, द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज ऑलवेज टेकन एज hypotenuse. Okay, अच्छा. So now you find sin theta. निकालिए तो क्या आएगा sin theta. Perpendicular by hypotenuse. This is perpendicular AB by hypotenuse AC. What will be cos theta? Base by hypotenuse. Okay. What will be tan theta? Tan theta perpendicular by base. Means AB by BC. Okay, find cot theta, base by perpendicular. Sec theta, hypotenuse by base, and cosec theta, hypotenuse by perpendicular. बोले ये बात तो आपको समझ में आता ही है. जरा आप cos 90 माइनस थीटा निकाल के देखिए. साइन से निकालिए, बेटर रहेगा. ये चीज आपको पता है, ठीक है. अब आप निकालिए साइन 90 माइनस थीटा और देखिए क्या आता है. 90 माइनस थीटा मीन्स ये एंगल, इसका साइन आपको चाहिए. इसके साइन, इसका परपेंडिकुलर बाय इसका हाइपोटेनस. इट्स साइन, इट्स परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर होगा ये सामने वाला. हाइपोटेनस तो यही रहेगा, तो इसके लिए इसका साइन इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC एंड हाइपोटेनस AC. So sin 90 minus theta will be BC by AC. BC by AC means what? It is cos theta. बात समझ में आया? तो sin 90 minus theta will be your cos theta. समझ गए बात? जैसे ठीक है, sin 90 minus theta cos theta आप समझ गए. देखिए एक एग्जांपल, जैसे आपको लिखना है sin 72 डिग्री. sin 72 को आप लिख सकते हैं sin 90 minus 18. Okay, and sin 90 minus theta is cos theta. So sin 90 minus 18 will be cos 18. Is not it? So sin 72 degree can be written as cos 18 degree. Understand the thing? In this way, one trigonometrical ratio can also be changed. See one more. Suppose you are writing sin 60 degree. Sin 60 degree can be written as sin 90 minus 30, and sin 90 minus 30 is cos 30. So sin 60 degree will be same as cos 30. Okay. Now come to cos
90 minus theta. Cos 90 minus theta. This is the angle 90 minus theta. Its cos equal to base by hypotenuse. For this angle, this is perpendicular, this is base. AB is the base and hypotenuse is AC. So cos 90 minus theta will be AB by AC. See here, AB by AC. AB by AC means it can be written as sin theta. So in this way we are getting cos 90 minus theta equal to sin theta. Suppose you are writing cos, take any angle, 54 degree. Cos 54 degree can be written as cos 90 minus 36. Is not it? And cos 90 minus 36 will be your sin 36, because cos 90 minus theta is sin theta. It's not it. So cos 54 degree can be written as sin 36 degree. Understand the thing? So you must remember sin 90 minus theta is cos theta. Cos 90 minus theta is sin theta. Similarly, tan 90 minus theta. Yeah. What will be tan 90 minus theta? For this angle tan, perpendicular by base. For this angle, perpendicular is BC, base is AB. So it is BC by AB, and BC by AB is cot theta. So it will be your cot theta. So you must understand sin 90 minus theta, cos theta. Cos 90 minus theta, sin theta. Tan 90 minus theta, cot theta. And similarly, cot 90 minus theta will be your tan theta. Sec 90 minus theta will be your cosec theta, and cosec 90 minus theta will be your sin theta. You will find yourself these three. As here calculated sin 90 minus theta, cos 90 minus theta, tan 90 minus theta. Similarly, you will find cot 90 minus theta equal to tan theta. Sec 90 minus theta equal to cosec theta. Cosec 90 minus theta equal to sin theta. So these were some result. First, sin 90 minus theta, cos theta. Cos 90 minus theta, sin theta. Tan 90 minus theta, cot theta. Sin का cos, cos का sin, tan का cot, cot का tan, sec का cosec, cosec का sin. Mistake. Cosec 90 minus theta will be sec theta. देखिए उसको करेक्शन कर लीजिए, इसको गलत नहीं कीजिएगा. Cosec 90 minus theta will be sec theta. देखिए इसको थोड़ा इधर डिस्कस भी कर लेते हैं. यहाँ देख लीजिए, cosec 90 minus theta, ये है ना 90 minus theta, इसका cosec. Cosec will be hypotenuse by perpendicular. For this angle, this is perpendicular, this is hypotenuse. So it will be your hypotenuse by perpendicular, means BC, and AC by BC. ये देखिए, AC by BC होता है sec theta, है ना. So you must remember cosec 90 minus theta is sec theta. Sin का cos, cos का tan, tan का cot, cot का tan, sec का cosec, cosec का sec. In this way you have to remember. So these were called trigonometrical ratios of 90 minus theta. ये सबको बोला जाता है trigonometrical ratios of 90 minus theta. Okay. So in this video
you keep this much result. In the next video, means in part 5, we solve varieties of problems based on relation among trigonometrical ratios, based on trigonometrical ratios of special angles, based on these results. So in part 5 and part 6, we solve varieties of problems, not only from your textbook, we solve from other textbook also. Okay, and then after 5, 6, then 7 onward, 7, 8, your height and distance will come. Okay, so go on watching trigonometry. Thank you for watching.